फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। तेरी चाल है, हिरनी के जैसी आंखें हैं तेरी, बुलबुल के जैसी तेरी चाल है। माथे पे तेरे सूरज की लाली, रेशम के जैसा तेरा बाल है। चांद सितारों में, एक हजारों में, तेरा यहाँ कोई जवाब नहीं है। शोख बहारों में, महके नजारों में, बाग में भी ऐसा गुलाब नहीं है। खुशियों में तू है पली, हर गम से अनजान है। खुशियों में तू है पली, हर गम से अनजान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। Thank you so much. We like to welcome our respected Mohini Didi ji. Mohini Didi has been coming to meet every group with great love. So today again, we will be listening class from Didi. The topic is renunciation and act of love. ठीक है? प्यारे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, एक तू ही तो है बस हमारा। तुझसे रोशन है सबका सितारा, एक तू ही तो बस है किनारा। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा,
चावा। मन में जो भाव तेरे लिए है, खुश हो के पुण्य किए हैं। मन में जो भाव तेरे लिए है, खुश हो के पुण्य किए हैं। तेरी बताई राहों को चुनकर खुशियों से वादे किए हैं। मैंने जो चाहा मिला है, अरमानों का गुल खिला है। जानता हूँ तू चाहे मुझको, दुआओं में रखना तू सबको। मुझको तो है तेरा सहारा, प्यारे बाबा मीठे। Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you for such a happy and beautiful welcome. I was thinking that, do you all get to dance or not? Because I know that before we used to have a lot of cultural programs and dancing. So I was happy to see that there was a dance. One time I was passing the history hall. During Brahma Baba's time, there was only one hall, and that was History Hall. You all know History Hall? Yes? No? Yes. So Baba there was like, you all do like this, but in an angelic way. When I start going in trance, so like I am dancing there. So even here, hands were moving, all that. But this we call, one is dance, other is called ras. Ras is like, they show Sri Krishna and gopis and in a rhythm like, which is not with the music, but it is something like super senses joy. And when you are in super senses joy, you feel like dancing.
So when you feel like dancing, then your organs are moving, but they look very, very angelic. So we call that as ras, right? You have heard word ras Leela. Yes? Maybe one day we will do ras Leela. So Baba, when I looked through the window, was doing ras on his own. And that scene I can't forget, that he was in so much supersensitive joy that he was dancing with Shiv Baba very beautifully. Yeah. So in Brahmin culture, supersensitive joy and ras is part of our culture. Happiness is very important. There is a saying that happiness is like a diet. You can eat everything, you can feed your body, but if you're not happy, your face will not be cheerful. Your skin color, when you are happy, it blossoms, is shining, is bright. And when you are not happy, somebody says that it becomes like a dry prune, because there is no smile, no beauty, no sparkle, right? But Baba's, all the children should always be happy. Even the theme which Baba has given for this month is all attainments, Emperor of the land free from sorrow, carefree king, right? So are you all carefree kings? Yes? Let me see hands. Carefree kings. Everyone. Wow. So our topic is renunciation with love. Is it renunciation which increases love, or it is love which helps us to be renunciate? Once Mama, or I think Didi and Mohini said, or Dadi Gulzar, somebody, one of Dadis said, if you have to throw garbage, will you be happy or sad? And if there is someone who is offering you to take all your garbage and burn it, you should feel happy, no? So, renunciation of what? With whatever is useless, whatever is waste. But one of the habit which some or other most of us have, so you go in your garage and you see lot of stuff which you know you are not using, right? So you spend a day, you sort out, you keep on the side, and you are supposed to throw. Then you look at it, maybe I should keep it, it could be useful. Okay, we again sort out, and half of the garbage stuff I take out again by saying, I can use it sometimes. Is it right? You agree? So half of that we keep, half we throw. Then next time again, after 1 month, again we say, but maybe we should, because some more have accumulated. Let me sort out, throw some. Right? So sometimes that habit of keeping the old stuff by thinking it could be useful, we don't throw it. So renunciation also, some do step by step.
not immediately. Let me, like Baba gave example of surrender. One is surrender where Baba gives example of with one sword finish. So we all did renunciation of all the 5 vices. Lust. But when Mama said to me one time, I was very new. Mama said, jealousy is the leftover of lust. So I said, jealousy? Yeah, who won't have jealousy? No. So even if you are like kind of comparing and or in other words, even there are desires, because in Hindi the lust is called kam, and then they say kamnai means desires. Any kind of desires are there. So that means, lustful in the sense of, it could be greed, it could be material things. I think all of us, when we come to Baba, we renounce vices, right? But Mama said that if you have a chronic disease, you recover, but there is weakness. Weaknesses are left. So for a while we notice there is a lot of intoxication when we come to Baba. And we kind of start renouncing. Renunciation starts in a very physical way. Like you want to just give everything to be used in worthwhile way. So it's not only vices, but also materially. I remember in our culture we wear a lot of jewelry. Diamond, gold, this, that. And when I came, I looked at Mama. I took everything. My bangles, my rings, I have to renounce. I have to use it in Yajna Seva. So renunciation do happen, but in the gross way. So renunciation, Baba says, should not be visible as renunciation, but as fortune. In our culture in India, if someone wears white, is not considered auspicious. That means you should have some ornament, some colored clothes. If you're wearing just plain white, it's only when women get widow, they wear white. So everyone has to have something. So I remember when we used to start wearing white, a lot of people looked at us. But our intoxication is that I am married to God now. I remember a lot of people will ask us, you all are renunciate,
but your faces look very bright. One time I was traveling in Air India, which I do all the time. So a man was sitting with me, very young. Ma'am, can I ask you, are you in love with someone? So I smiled, I said, yeah, of course. Can I know the name? Can I know where he is? So I thought it's a good chance to tell about my love with God. So I started sharing. But I was also wondering how he come to know. Then he said, because when you smile, there is some kind of feeling that you are in love with someone. So when Baba says, no, that we should have smiling face, not I'm trying to smile, but my face is smiling. You see the difference, right? When you are cheerful, you are happy, you are in love, your smile also indicates, it shows love. So renunciation in love, with love, for love, shows that love, shows that fortune. And you are able to, with lot of intoxication, give introduction of Baba. Other time I was sitting and there was a passenger. He was Muslim from Lucknow. He said, sometimes when they don't travel often, they have a lot of questions. So he asked me 2-3 questions and I was a bit quiet. And he said, can I tell you one thing? I said, what? He said, you have a good temper. So I said, thank you. But I said, oh, he knows because he hasn't. So the fortune in form of virtues. Virtues in the form of being cheerful. Fortune in the form of feeling, others feel also love from you. You know, there is a lady, her name is Hugging Mother. Yeah, you heard about her? She hugs people, hugs. In New York, one time, 10,000 people in a church she hugged. And one time I was sitting at the airport, and all these men, women will come, and she will hug them, and they are so happy. So when I entered the flight, one of the air hostess, are you hugging Mother? I said, no, I am not. Because I thought, before everyone start putting their hands around me, we don't want anyone to touch us, right? And she's hugging Mother. So then they say, but what kind of mother you are? If you are not hugging Mother. So, fortune, at every step, wherever we are, our presence should make people feel what is the real fortune. What is the real fortune? Is our joy, is our happiness, is our love, also our sweetness. 2-3 days ago, Eric from Montreal, he was asking me a few questions in a Vyakti Parivar. He said, sweet, sweet, sweet. Why we say sweet 3 times? I said, we are sweet. But someone is loud, is little bit kind of not very sweet, but you still remain sweet. Then there is third person who is also not sweet, but you remain sweet. Right? Whatever sanskar anyone has, I have to be sweet. So the bitterness of vices, bitterness of irritation, frustration, disappointed,
disillusioned. So these are the weaknesses of vices, the traces which are left. And now at this time, we have to be complete renunciation in the sense of all the weaknesses have to be removed. So that means it's not viceless. But what is the word after viceless? What is the word? Degree? All viceless and? Say it. All virtues. Viceless and all virtues. There are some people who are viceless, but no cheerfulness, no happiness, no peace, you don't see anything. But Baba's children, we are not only viceless, but we are all virtuous. That's our fortune, that's our nature. All virtues. Yesterday, some sisters came from Australia. They didn't know the difference between eternal and original. Because we practice a lot of our, what is my eternal stage? Because that's also renunciation. No? I am soul and 7 of my virtues are eternal. And original are of golden age, of deities. So when we are in eternal, we are like angels. And then when we have original, we are like deities. Our eyes bestow blessings. Our hands always. People keep saying bye and we say bless you, right? Your hand raises these days, right? No? Anyone say yes? Bless you. We don't say through mouth. So renunciation is okay of vices, but all virtues in our degree are very, very important. Because that's our decoration of a goddess or God. But then as we move along, real renunciation is of I and mine. One time Dadi Janki said, very few teachers forget whom they didn't give course. That means as soon as a person, oh, I gave course to this one. I gave course to, she said they never forget that I gave course. That means certainly I is there, right? But two blessings I remember from Baba. Once, those days Baba used to say, bring VIPs, and our conferences should have international guests. So we used to bring a lot of VIPs. I remember one time there were 10, 11. And there were 2 presidents, one of Costa Rica, and one was retired, one from somewhere. There was 2 gurus, very famous. There was a UN Under-Secretary General. I mean, quite a big group we brought. So they were all in conference and, So they used to see how Baba's children, family serves, right? So when they all had left, then Baba came. So we all went in front of Baba, and that time Baba used to meet personally. So when I went in front of Baba, because most of these guests were connected with the USA, Baba said, you did good service. It was special. I said, but Baba, when you do everything, why you praise us?
So Baba says, so I said, well, we are just instruments. When you also not have awareness or forget, not have awareness, I am the instrument. You see the subtle renunciation. Not that I am instrument, it's Baba who did it. There is a word called nimit. We can say instrument, but nimit is like someone is using you. Baba ne hame nimit banaya hai. That's our language. Baba ne mujhe nimit banaya hai. It's not I am instrument, but Baba has made me instrument. So even instrument conscious, there is a renunciation. So Baba said in Hindi very beautifully, that even if you have specialities, but even if that renunciation of my specialities is not there, that's true renunciation. And Baba will make you instrument more and more in unlimited way if you don't have this consciousness. If you have consciousness of I, Baba cannot make it unlimited because then it's you. I don't know if I'm making it clear, but what I'm saying that renunciation is very subtle. First in a very physical way, and then it's very subtle where all the time Baba does this. I meet a lot of Nivasis these days. So yesterday there was 2 instruments who were 14-year-old when they came to serve. Now they had been serving since maybe 40, 50 years. And they were remembering how Dadis loved us, and it's because of their love. 35 years they had been cooking or buying vegetables, or, when you think of 30 years, you keep cooking every day, or buy vegetables, or buy milk. Lot of seva, right? But one thing they were remembering is either Baba or Dadi Prakashmani. But there was not like even little bit feeling of I. Because this very subtle I, either it could be body consciousness or it could be ego. But what I think, even here, everywhere, from where they learned all this. They didn't go to university. They didn't go to learn skills. And they're doing so good. Take away food for those who travel 3 days up to Bangalore, or their trains take 2-3 days. And they were telling me how creative they are. That they have to cook something which can stay for 3 days. So what kind of vegetables, what kind of pickles, what kind of chapatis? It's only their love that they think of what can we cook for them to take. Family, it's like a family. So our specialties are not from universities. Our specialties are from Baba and for love for family and yagya. So if renunciation, total renunciation is there, you will get lot of qualifications or lot of
virtues, our virtues are different than virtues of Lokik people. So, in the beginning, if we notice a Brahmin getting upset or angry, so we use, how can you get angry? Baba's children. So we went to Mama and we said, Mama, sometimes Lokik people have more patience. They are more sweet than Brahmins. So Mama said, theirs are not divine virtues. So I said, what's the difference? Patience is patience, whether it's a Lokik person or a Brahmin. Tolerance is tolerance. So Mama said that in their tolerance, there could be some kind of personal interest, and their kind of tolerance could be subservient sometimes. But your tolerance is because of Baba's task, because of your aim, that I want to be angel, I want to be deity, so your tolerance is different. So our virtues, confluence age virtues are godly. Golden age virtues are divine. Godly virtues changing into divine virtues. Now you will say, what is the difference? Godly virtues are virtues, Baba is ocean of love. So I have to be master ocean of love. What is Baba's love? Children must study. Children must have good dharana. Now in golden age, love is not of that kind. In golden age, Lakshmi Narayan won't say, study. Will they say? No. But here Baba says, love means you should study. So godly virtues. And then there are divine virtues. So our virtues are different than Lokik people. So I always say that some Baba's children remember viceless. But what about second one? All virtuous. Many times some of the sanskars, they cannot be transformed, but you can cultivate new ones. Let's say you have habit of getting irritated or upset. It has to be renounced. But if you can cultivate or inculcate patience, tolerance, love, that sanskar will go, change. So some try to change the sanskar, but actually you can replace sanskars of vices into virtues. Why I get upset? Lack of patience. So I get irritated. Why can't you? You are punctual, other one is not. So you get very upset because you want to reach in time. But if I inculcate tolerance or patience, adjustment, all the virtues and powers at confluence age, then transformation happens, right? So our process of renunciation by inculcation of all virtues, so viceless and all virtuous. And then when you are inculcating virtues, virtue also is a power, right? Like tolerance is a virtue, but also power. So Almighty, I am becoming Master Almighty. Baba is bestower,
I am also becoming master bestower. So renunciation is important. But why Baba connect renunciation with tapasya? It's only when you are renunciate that you can be tapasvi. Otherwise, whatever is not renounced will pull your intellect. You can't be tapasvi. It will pull your intellect. That is why whatever we have, even materially, we say it belongs to Baba. It should be used in worthwhile way. But also even yesterday or day before, we had been listening to Ramesh Bhai, Brother Ramesh, who was our lawyer and accountant for whole organization. He was telling us all surrendered BKs should also make a will. So I said, but what do we have? Few clothes and something like that. But he used to say, if you don't make, you should make will, so that whatever is there goes to yagya. But also, if you don't make will, your intellect in the end will be pulled for something or other. Or your family would want to know what you had, where it went. One Dadi was in yagya for 20 plus years. When she left body, her family came, and first thing they asking, where are her belongings? What belongings? When she came, what she brought? So, how real renunciate means my intellect should and will not be pulled by anything, whether it is material things, whether it is relationships or circumstances. These are the three things pull the intellect, right? Either material things, anything you have, at least one other person should know. Human relationships, there is very subtle pull or attachment, very subtle. In the end, it has to be Baba, Baba's remembrance, Baba's thoughts. And third is, somebody said before leaving body, I want to tell you what this person did to me. He said something which really hurt me. So that person is holding hurt. Because that also intellect is pulled. So true renunciate really means that there is only remembrance of one. Because all that which is connected, attached with the intellect has to be forgotten, has to be renounced. Right? And renunciation keep happening. Nobody can say, I am 100% renunciate. How will you know until there are some tests or circumstances? And one thing with renunciation, you feel light, very light, double light. Everything belongs to Baba. And there is a magic when you say everything belongs to Baba.
Nothing of yours will be lost ever. I have so many experiences that nothing is lost. It will come to you. You will not be ever deceived by anyone. No one will come and take away or deceive you for, cannot do it, won't be. Everything belongs to Baba. So Baba is the protector. Baba will take care. So, renunciation is the fortunate one. Everything belongs to Baba. My intellect shouldn't be pulled. And very, very light, double light. Baba renounced everything. Now 88 years. What has happened? It has grown, right? I came when there was very little Panda woman. Very few could stay. And now we have so many Babas, beautiful, not only in Mount Abu, but all over world, all over India. Big, big, big buildings. Every center, big buildings. Is Babas and few others who surrender their wealth. From that wealth, what has happened today? That's called fortune also. Generally things decreases, they diminish. But here, it's abundance. So when I renounce and surrender, what happens to that? It's like a seed sown and hundreds of fruits just from one seed. So all of us have to churn, we have to think that why nothing has to be wasted. That means I have to make it use in a worthwhile way, make use of it in a worthwhile way. So that my last moments I know I am free. Someone had been asking about royal bondages. So whether it is relationship with body or alaukic, material things, long list, right? So create your fortune of all attainments, right? Okay, it's so lovely to see big family here. And was it yesterday, this, there is Vietnam family, right? They brought toli, lot of toli. So it came to us, so we have brought toli for you. And also a gift for you, toli and gift, right? Blessing card. Bhumi Ben will tell you what gift we have. So everyone is okay, right? Yes? Don't get sick, right? No one. Wear enough warm clothes. Keep drinking hot water, right? If you drink hot water, even if there is something in your stomach, it will get clean. Hot water. Okay. Om Shanti. Om Shanti.
Let's. Then we will remember Baba. Yeah. Rajni Ben is here. Yeah, she's here. Where is she? Rajni Ben has been helping Vijay Bhai, everyone. Rajni Ben, आ जाओ, आपको फूल देते हैं. आपको फूल देते हैं. बहुत सेवा कर रहे हैं. आपके लिए है. That's good. No. I think most of you must have about Avyakti Parivar, right? How many of you know? So last year we made a timeless calendar. How many? Everyone got timeless calendar? No? Okay, we have some. But then this year we had another thought, and that was we have created this pack of 100 blessing cards. How many of you would like to serve 100 souls? Those who will serve will get this pack. Right? You go to your doctor, anywhere you go, you feel that that person is interested, you just give this very beautiful written, designed, every blessing card, different design, different color, different blessing, very beautifully created. Judy is there, right? Judy, thanks for that. So we have produced, and we keep giving as many, in the sense of we print 5,000, then another 5,000, whether calendars or that, both. So for next year, if you have any idea, we are thinking what we will do. So every year Avyakti Parivar makes one gift, right? So Bhumi Ben wants to give everyone. Okay, let's remember Baba. When you come for Toli, you ask for whether calendar or blessing card, right? Judy Ben, Tanya Ben Ras करेंगे. Oh, Julie and Tanya wants to do Ras. Come. I don't know, I heard announcement. वो मेरा बाबा है वाला song लगाना. I heard announcement. Come. Everyone can join, right? Yeah? It's a good stretching. Just few minutes. Yeah. Anyone else wants to join? Come. Bolivia, brother. Yeah, they will. We will only do this if you all stand and join. वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला।
वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला, करुणा प्रेम दया का सागर, करुणा प्रेम दया का सागर दिल में अपने बसाता है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले, पलकों पर हम सबको पाले, जीवन नैया को है संभाले, ले पतवार हाथों में बाबा, ले पतवार हाथों में बाबा, मंजिल तक ले जाता है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। खुशियों के हमें रंग है देता, जीने का हमें ढंग वो देता, खुशियों के हमें रंग है देता, जीने का हमें ढंग वो देता, मानव से वो देव बनाकर, मानव से वो देव बना धरती पर स्वर्ग सजाता है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। Okay, thank you very much. So we'd like everyone to take your seats, and we want to call all those from Panda Bhavan, only those from Panda Bhavan, those from Panda
बोल रहा हूं, पर जो उसके अंदर है, जिस व्यक्ति के बारे में हम नेगेटिव बोल रहे हैं, उसके प्रॉब्लम भी सब हमारे में आ जाएंगे। उसको बीमारी होगी तो वो बीमारियां भी हमारे में आ जाएगी। इतना डीप वृत्ति काम करती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, एक बहुत अच्छी एक लेडी आई थी, हीलर, एक्यूपंक्चर वाली, उसने बताया था कि कैसे उसने घुटने के दर्द को एक लेडी का ठीक किया था। उसको घुटने के दर्द होता था, उस लेडी को बोला, डॉक्टर ने कहा सर्जरी करना पड़ेगी। वो लेडी उसके साथ बैठ गई और पूछने लगी, आप क्या सोचते हो? बोला, मैं अपनी सास के बारे में सोचती हूं और काफी नेगेटिव सोचती हूं। सास को घुटने का प्रॉब्लम था, सास के घुटने का प्रॉब्लम उसको भी ट्रांसफर हो गया। एनर्जी ट्रांसफर होती है। जो भी हम सोच रहे हैं, जो हमारी वृत्ति में है, वो ट्रांसफर हो रहा है, न चाहते हुए भी जा रहा है। इसीलिए वृत्ति से सेवा करनी है तो पहले वृत्ति को पॉजिटिव और पावरफुल बनाओ। और वृत्ति पावरफुल बनती है पवित्रता से, प्यूरिटी से, क्लियरिटी से। एक भी मेरा किसी के प्रति कोई नेगेटिव संकल्प नहीं, निस्वार्थ निरसंकल्प स्थिति हो, हर एक के प्रति रहम की भावना हो, जिसको ह्यूमैनिटी कहते हैं। इस साल ब्रह्म कुमारी का साल ही पूरा क्या मना रहे हैं? काइंडनेस और कंपैशन, दया करुणा। वो हमारा इंग्रेडिएंट है, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। देवता तो हम बनेंगे, वहां कोई किसी चीज की जरूरत नहीं होती, पर ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही क्या है? पवित्रता, दृष्टि, वृत्ति, संकल्प में। अगर करुणा, दया भावना नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, तो हम ब्राह्मण नहीं हैं। चाहे ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान एक लेवल है, पर अंदर वृत्ति तक वो भावना जब होती है तब दूसरों को जाती है। एक राजा था, वो काफी ओल्ड हो गया था। राजा ने सोचा, अब मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा? उसने कहा, उत्तराधिकारी भी ऐसा होना चाहिए जो प्रजा के लिए, भले के लिए काम करे, प्रजा को समझे। हाथ उठाए, हाथ उठाए, हाँ, और कहें, आई एम द बेस्ट। हाँ, बोलो बोलो, आई एम द बेस्ट, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम ब्यूटीफुल, दया का सागर हूं। तो राजा ओल्ड हो गया था, उसने सोचा सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसने घोषणा करवा दी कि मेरे को उत्तराधिकारी चाहिए, और ये कंडीशन उसमें होना चाहिए, उसको प्रजा के लिए प्रेम, दया, करुणा होना चाहिए। ये कंडीशन है। कई यंगस्टर्स आने लगे। एक बैगर था, भिखारी था, उसने सोचा मैं भी चलता हूं। उसके पास उसने थोड़ा बहुत इकट्ठा किया, कपड़े नहीं थे तो कपड़े थोड़े ठीक से पहने, खाना इकट्ठा किया और चल पड़ा। जैसे ही राज्य के नजदीक पहुंचा तो एक बहुत गरीब व्यक्ति बैठा हुआ था, ठंड से कांप रहा था, और उसको बोला कि मेरे को बहुत भूख लग रही है, ठंड में कपड़े नहीं हैं। उसने सोचा मैं जा रहा हूं राज्य में, महल में, फिर भी इस व्यक्ति को मेरे से ज्यादा जरूरत है। उसने अपने कपड़े जो थे थोड़े उसको दिए, खाना भी उसको थोड़ा दिया जो भी था, और फिर महल में गया। महल में उसको एंट्री करके वो रुका। फिर अगले दिन राजा आया और ये व्यक्ति भी गया।
जैसे ही इसने आंखें ऊपर करी तो देखा राजा तो वही था जो भिखारी बनकर बैठा हुआ था। राजा ने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं ही वो था और मैं एग्जाम ले रहा था और तुम उसमें पास हो गए। तुम्हारे में मानवता है, करुणा है, दया है। मेरे को ऐसा ही राजा चाहिए जो व्यक्ति लोगों के कल्याण के लिए काम करे। राजा वही बनता है, सत्युग और त्रेता में राजा वही बनेगा जो पूरे विश्व से, यूनिवर्स से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। हमने दादियों को देखा, बड़ी दादी, दादी जान की, यही बड़ी दादी जब क्लास करा के आती थी कुर्सी रख देती थी और कहती थी जिसको भी काम है आकर मेरे से मिले, मैं फ्री हूं, अवेलेबल हूं। दादी जान के भी व्हील चेयर पर कॉन्फ्रेंस हॉल में आती थी, क्लास कराती थी। लोगों ने पूछा आप कार में आ सकते हैं, आप व्हील चेयर पर क्यों आ रहे हैं? दादी जानकी ने कहा कि मैं लोगों को देख रही हूं, बात कर रही हूं, दृष्टि दे रही हूं, वो मेरे से बात कर रहे हैं। कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम लोगों से जुड़े हुए नहीं हैं, सिंपल नहीं है, सैंपल नहीं है, तो राजा नहीं बनेंगे। वहां राजा का पहला ही कैरेक्टर होता है वो लोगों के भले के लिए अवेलेबल है। जब भी कोई आए वो अवेलेबल है। इसीलिए बाबा ने कहा मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा, एक आंख से मुक्ति, दूसरे आंख से जीवन मुक्ति का वर्षा देना है। और आने वाला समय वही रहेगा। और मैं देख भी रहा हूं आने वाला समय नहीं, शुरू ही हो गया है। लोग अब कुछ नहीं चाहते, वो सीधे कहते हैं हमें ये चाहिए, हमें प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, शक्ति चाहिए। वो अपनी डिमांड रखते हैं। कस्टमर केयर सर्विसेज हो गई हैं। आप जिसको प्यार चाहिए उसको कहोगे शांत स्वरूप हो, शांत स्वरूप हो, उसको चाहिए ही नहीं। बचपन से उसको जो नहीं मिला था उसको वो चाहिए। साइकोलॉजी में 3 गुण, शांति, प्रेम, खुशी, ये 3 चीजें हर एक को चाहिए। प्रेम, शांति, खुशी, ये 3 गुण न होने के कारण ही न्यूरोटिक डिप्रेशन प्रॉब्लम आते हैं। मदर टेरेसा ने भी कहा था जाने के पहले कि सबसे बड़ी गरीबी कौन सी है, तो मदर टेरेसा ने कहा था सबसे बड़ी गरीबी 2 है, अकेलापन, लोनलीनेस, और दूसरा कोई मुझे प्यार नहीं करता है। अगर कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरी सुनता नहीं है, तो बीमारी आती है। हॉस्पिटल में भी रिटायर्ड लोग ज्यादा आते हैं, कहते हैं हमें भर्ती कर लो। क्यों? यहां सब आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, डॉक्टर आ रही, नर्स आ रही है, सुन रहे हैं। घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं है। तो क्या कैरेक्टर हो गया? लिसनिंग और प्यार। हाथ उठाएं और अपने को कहें आई लव यू, आई लव यू। बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, आई एम बेस्ट। जब कभी भी ऐसा लगे डाउन हो रहे हैं, कोई कुछ अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, तो हम खुद को ही करें। कोई नहीं कर रहा, सब बिजी हैं। पहले दादियां थी, कितना वो होता था, दादियां बुलाती थी, बैठो चाय पियो, ये करो, लीडरशिप थी। अब सब क्या हो गए? सब भाग रहे हैं, सब बिजी हैं अपने में ही, एक मैकेनिकल हो गए हैं। और अब इस मैकेनिकल सोसाइटी में क्या करना है, चाहे बाहर चाहे कहीं भी, खुद को खुद प्यार करना है। हाथ उठाएं, आई लव यू, आई लव यू,
अगर ऐसा रोज करोगे 5 बार बीमारी नहीं होगी। इल का अर्थ ही क्या है? ILL। इल का अर्थ ही क्या है? बीमारी। पर एक डॉक्टर ने बहुत अच्छा इसका मीनिंग दिया। इल का अर्थ है आई लैक लव। आई लैक लव। खुद को देख ही नहीं रहा हूं, खुद से बात ही नहीं कर रहा हूं, भाग रहा हूं। पहले खुद की सेवा करूंगा तो फिर दूसरी सेवा भी होगी। मैं ठीक हूं, मेरी हेल्थ ठीक है तो दूसरी सेवा करूंगा। तो स्व सेवा विश्व सेवा दोनों का बैलेंस हो। विश्व कल्याणकारी भी बनना है तो मेरे वाइब्रेशन पूरे यूनिवर्स में जा रहे हैं, वो मेरी खुद की वृत्ति के ऊपर डिपेंड है। मेरा एटीट्यूड, जो मैंने कहा एक इंग्लिश मीनिंग है वृत्ति का, एटीट्यूड। एटीट्यूड का अर्थ है मैं हूं ही शेर, जंगल का राजा है। पर शेर से स्ट्रॉन्ग हाथी है, वजन में हाथी है, हाइट में हाथी है। जिराफ हाइट में बड़ा है, लोमड़ी चालाक है, इंटेलिजेंट है। शेर ना बड़ा है, ना हेवी है, ना चालाक है, फिर भी जंगल का राजा है। क्यों? क्यों? हाथी चाहे तो एक पांव उसको मारे तो खत्म कर सकता है, इतना स्ट्रांग है हाथी। हेवी है, हाइट में भी बड़ा है, जिराफ बड़ा है, लोमड़ी चालाक है। शेर में तीनों कैरेक्टर नहीं है, पर वो जंगल का राजा है, क्योंकि वो सोचता मैं हूं ही जंगल का राजा। जब हाथी सामने आता है शेर के, तो शेर सोचता है मजा आ गया, आज तो मेरा खाना हो गया। हाथी क्या सोचता है? अरे बाप रे, आज तो गया। तो दोनों के फर्क क्या हुए? एटीट्यूड। एटीट्यूड। इसीलिए बाबा हमें क्या सिखाता है? स्वमान सिखाता है। जितना हम अपने को सम्मान देंगे, स्व को मान देंगे, उतना हमारा वर्थ बढ़ेगा, सेल्फ वर्थ बढ़ेगा। इसीलिए कभी भी अपने सम्मान को, स्वमान को कम ना करें। फिर से उठाएं, मैं परमात्मा की श्रेष्ठ संतान हूं, बाबा मेरे साथ है, वाह मेरा पाठ। खुद को चार्ज करें। जब कभी भी लगे डाउन हो रहे हैं, खुद को एनर्जी डालें। वो एनर्जी ड्रिंक तो चलता है। इम्यूनिटी भी 10% फिजिकली रहती है, 90% इमोशनल रहती है। 90% इमोशनल रहती है, केवल 10% ही डाइट रहती है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है जो बाबा सिखा रहा है? अपने को सम्मान देते रहो, स्व को मान देते रहो। मैं भी करता हूं। स्व को जितना मान करेंगे उतना वो कैरेक्टर मेरे डीप जाएगा और वो मेरी वृत्ति बन जाएगी। फिर हर एक में मैं गुण ही देखूंगा, अवगुण नहीं देखूंगा। हर एक में, जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया, हर एक के गुण देखता था। प्रकृति के भी गुण, फूलों के भी गुण, हर चीज से वो सीखने का आर्ट होना चाहिए। चाहे मधुमक्खी है, बम्बल भी है, हर एक चीज का बाबा ने वर्णन किया मूल्यों में। हमें किसी के अवगुण को देखना ही नहीं है। देखना ही है तो केवल हर एक के गुण को देखना। गुण को देखेंगे तो हमारे में भी गुण आ जाएंगे। इसीलिए
हमेशा एक दूसरे को जब देखो और कहो, हाँ देखो और कहो, देखो और कहो, बहुत अच्छे हो, यू आर सो गुड, बोलो बोलो, हाँ बोलो एक दूसरे को देखकर, यू आर सो गुड, सो ब्यूटीफुल, सो नाइस, आई एम हेल्दी, I am wealthy, I am beautiful, I am beautiful, I am beautiful. एक स्टेटमेंट है, योर एटीट्यूड डिटरमाइन योर एल्टीट्यूड। आपका एटीट्यूड ही आपको टॉप पर ले जाता है। चाहे हम पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, इंटेलिजेंट हैं नहीं हैं, डिग्री है नहीं है, पर एटीट्यूड अगर पावरफुल है तो कहीं भी पहुंच सकते हैं। जिन जिन का एटीट्यूड पावरफुल था वो लोग टॉप पर गए। आईक्यू पढ़ाई 20% सक्सेस देती है, 80% होता है हमारा EQ, हमारा एटीट्यूड, दृष्टिकोण। तो उसको हमेशा, वृत्ति को हमेशा पावरफुल, पॉजिटिव बनाओ, पर्पसफुल बनाओ। पॉजिटिव भी हो, पावरफुल भी हो। और बाबा ने कहा वृत्ति को पावरफुल बनाने का रास्ता एक शुद्ध संकल्प और प्यूरिटी, पवित्रता। जितनी क्लियरिटी होगी मन की, बुद्धि की, उतना सक्सेस रेट ज्यादा होगा। जितना ट्रांसपेरेंसी होगी, ट्रांसपेरेंसी का अर्थ है अंदर बाहर एक। ट्रांसपेरेंट को हम कह लें फरिश्ता टाइप, लाइट ही लाइट, अंदर और बाहर एक है। जितना मैं ट्रांसपेरेंट हूंगा उतना मैं ट्रांसफर कर सकता हूं। कौन व्यक्ति वाइब्रेशन ट्रांसफर कर सकता है? जो अंदर बाहर एक है, शुद्ध है, 24 कैरेट है, क्लियरिटी है। शुद्ध का अर्थ है क्लियरिटी है। किसी के लिए उसको दुर्भावना है ही नहीं, कोई गलत नहीं है, किसी को वो पिन पॉइंट नहीं करता कि ये गलत है। जो भी हो रहा है वो ड्रामा अनुसार हो रहा है, उसमें मेरा भी पार्ट है। तभी मैंने कहा निस्वार्थ, निसंकल्प भावना, तब वो ट्रांसफर कर सकता है एनर्जी को, वाइब्रेशन को। आत्मा है ही बंडल ऑफ एनर्जी। सोल का अर्थ ही है एनर्जी, कॉन्शियसनेस। और ये एनर्जी लाइट का पुंज, प्रकाश का पुंज, वेव्स की तरह जाता है और पूरे यूनिवर्स में कनेक्ट होता है। एक जगह बैठकर हम सेवा कर सकते हैं। अब वो जो भागते थे हम सभी भाई बहन, अब थोड़ा कम करके फोकस करें मनसा सेवा पर, और उसके रिजल्ट ऑटोमेटिक आते हैं। ब्रह्मा बाबा भी बैठकर 2 बजे से मनसा सेवा करते थे, और उसी का प्रोडक्ट हम सभी हैं। दादियां भी जो उन्होंने टीम बनाई, दादियों की भी, सभी दादियां ऑलमोस्ट पावरफुल बनकर मनसा सेवा करी, और अंदर उनके कभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं रही किसी के लिए भी। मेरे को याद है एक बार दादी गुलजार जी से कोई इंटरेक्ट कर रहा था,
तो दादी ने कहा नेगेटिविटी क्या होती है, आप लोग बहुत बोलते रहते हो, होती क्या है? इतनी क्लियर थी। एक बार एक बहन आकर बोलने लगी ये हुआ, हॉस्पिटल गई। बोला क्या हुआ? कोई बड़ी